Good morning, dear students. I hope you all are fine today. So let us continue with our lesson, that is force and the pressure. So we had seen what is a force, that is a pull or a push, and we have seen the types of forces, contact forces and non-contact forces. Among them, we have studied about the contact forces, that is the muscular force and the force of friction, where two objects need to be in actual contact with each other. Now let us start with the non-contact forces, and the first of them is the magnetic force. Have you observed magnet लो, दो magnets लो, वो जब आप नज़दीक लाते हो, when you bring them close, either they attract each other or they repel each other. और अपने किसी आयरन के पीस को if you are bringing it towards magnet, then it will attract. ऐसे होता है क्या कि वो when they come in contact then they will attract or repel? No, you can feel कि वो जब when you are bringing them close, that time only they attract, वो अपने आप attract हो जाते हैं. So there is no need of them to actually be in contact with each other. वो जब only the thing is if they are brought sufficiently closer to each other, then they will apply force on each other or on any of the objects. So this is the non-contact force, and this is as it is exerted by a magnet, so this is called as the magnetic force. Okay, then see next is the electrostatic force. आपने कभी देखा है कि a scale, take a scale, if you are rubbing it on your head and you are trying to, if you are bringing that scale close to the small pieces of paper, that scale will attract the paper. Yes, or also a comb, if you comb your hair and bring that comb near to very small pieces of that of the papers, then papers will get attract to it. क्यों होता है? या विंटर सीजन में if you see the some kinds of cloth like polyester, it sticks to your skin. What is this? This all are electrostatic force. Electrostatic force is the force which is exerted by a charged body on the another charged or uncharged body. तो comb करते हो तो comb पे एक specific charge आ जाता है and then that charge will attract the other objects. You will learn it in detail later on. Okay, so this is about the electrostatic force. वहाँ पे भी आप थोड़ा distance पे भी वो comb वगैरह रखोगे तो the paper will get attract. There is no need to actually come in contact with each other. So it is a non-contact force. Or one force is there which you are very well aware, the gravitational force, right? तो जब the apple is falling or any fruit is falling down, तो वो नीचे क्यों आता है? Of course the force, okay, वह नीचे आके it is coming in contact with the ground, लेकिन वो जो नीचे आता है, who is pulling that out? The gravity is pulling that out, means the gravitational force is pulling that towards itself. तो नॉन कॉन्टैक्ट है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट में आए, वो कॉन्टैक्ट में तो बाद में आता है, बट व्हेन इट इज़ गेटिंग पुल्ड इट इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनीथिंग. So this is a non-contact force. The gravitational force is a non-contact force, and we know various examples of it, like if the leaves are falling, the fruits are falling down, or the rain, when the rain comes, then also it is waterfall जो होता है, जो water नीचे आता है, that is also due to gravity, right? So this all are the examples of the gravitational force, and this all are the non-contact forces. Okay, then we have completed about the forces. So this is all about the force, a push or pull. Now let us see pressure. अभी force और pressure में exactly difference क्या है? Force का हमने देखा, if you are pulling something or you are pushing something, that object will change its shape or direction, और उसके effects हमने देखे. तो ये हो गया force के बारे में. Now what is pressure? तो फोर्स तो अप्लाई हुआ है, लेकिन कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, दैट हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड. ओके, हाउ मच, सपोज एक स्पेसिफिक एरिया है तो उस एरिया पे हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, दैट इज डिफाइंड बाय प्रेशर. सो प्रेशर डिफाइंस दैट हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ गिवन एरिया. ओके, दैट इज द प्रेशर. So it is the measure of how much force is acting on a certain area. इससे हमको पता चलता है pressure. So how can we define? It is just force acting per unit area. Pressure is the force acting per unit area. अगर हमको formula बनाना है, it is very simple. Pressure equals to force upon area. कितना force apply किया है and how much, on how much area we are applying that force. Just put the values, you will get the pressure. तो प्रेशर का एक यूनिट होता है, दैट इज पास्कल यूनिट. ओके, यू नो ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज हैव द यूनिट्स.
So pressure, it has a unit called Pascal, okay, denoted by PA, P capital, A small. Unit is very important. जब कोई एग्जाम्पल आएगा सॉल्व करने टू फाइंड द प्रेशर, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेयर यू हैव टू गिव द यूनिट. सो यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. सो इफ यू सी प्रेशर का सिंपल एक वी कैन से सिंपल रूल है, इफ एरिया इज लेस प्रेशर इज मोर. अगर उस ऑब्जेक्ट का एरिया कम है और हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया है तो उस पर कितना प्रेशर आएगा, ज़्यादा. इफ द एरिया इज लेस प्रेशर इज मोर. Area is more, pressure is less. So it is opposite. Keep in mind, pressure and area. एक ज़्यादा है तो एक बड़ा हो, एक कम है तो एक ज़्यादा है, and vice versa. So if the area is smaller, then that object will have more pressure. Let us see few examples. So few examples of increasing the pressure by reducing area. हमारे डेली लाइफ में हमको अगर किसी चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना हो तो what do we do? We try to decrease the area. Okay, फिजिक्स सीखा नहीं है, हमको पता नहीं था, फिर भी वी वेर यूजिंग, यू नो. अगर हमको कुछ कट करना है, सब्जी कट करनी है, जो भी कट करना है, तो हम नाइफ लेते हैं. हम देखते हैं कि नहीं नाइफ का जो एरिया है वो कितना है. ओके, तो नाइफ का जो एज है, हाउ मच शार्पन इट इज़, वी सी दैट. सो द नाइफ विच इज़ वेरी शार्प, ओके, जिसका जो पॉइंट है वो अच्छा है, लाइक विच इज़ शार्प, तो दैट विल कट वेरी इजीली. और जिसका द एज इज़ नॉट सो शार्प तो वो कट नहीं करेगा. दिस वी नो, ओके, दिस इज़ वेरी कॉमन प्रैक्टिस एंड दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल. तो हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसे क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज जब नाइफ का एज शार्प होता है, इट मीन्स द एरिया इज स्मॉलर, एरिया इज स्मॉलर एंड हेंस मोर प्रेशर इज अप्लाइड. और जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना जल्दी वो ऑब्जेक्ट या फ्रूट और वट एवर यू आर कटिंग दैट विल गेट कट वेरी ईजीली, राइट? सो दैट इज़ दी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट विच यू माइट नॉट हैव ऑब्जर्व टिल नाउ, राइट? देन और एक एग्जाम्पल है, जैसे द हाई प्रेशर ऑन सर्फेस ऑफ द आइस is applied so that the ice will melt and allowing the ice skater to glide very smoothly. ये एक होता है ice जो skating करते हैं तो उस पर if they want to go it very smoothly and hence what they will do, they decrease the area so that more pressure will be applied. Okay, then nail, ये तो this is very common example. The nail which is pointed and the nail which is not pointed, you see, try to just fix it into a wood or in the wall, which will go with the pointed end. Yes, तो pointed end वाला जो nail है, the end is very pointed means area is small, उसके टिप का एरिया स्मॉल है, और जो pointed नहीं आप देखो उसका एरिया थोड़ा बढ़ गया है comparatively, right, compared to the pointed end. So this is the reason, as the area is less, so the pressure will be more pressure will be given to that nail, और वो nail जल्दी से अंदर जाएगा, right? So what we are doing, we are decreasing the area, okay, to increase the pressure on that object. Okay, तो हमारे लाइफ में you can see again so many examples nearby you. Okay, फिर एक होता है the pressure under the stud जो होता है, शूज़ के जो studs होते हैं, तो उसका जो एरिया होता है दैट इज़ गिवन लाइक दैट इज़ लेसन, द एरिया इज लेसन. वो स्टड इज सप्लाइड सो दैट विल हैव लेस एरिया, वो सोल का जो एरिया है वो कम हो जाएगा एंड दैट विल प्रोवाइड मोर प्रेशर और दैट विल हैव बेटर ग्रिप. ओके, दैट विल हैव एक्स्ट्रा ग्रिप ऑन द ग्राउंड. ओके, इसलिए जो प्लेयर्स होते हैं, यू मस्ट हैव सीन देयर शूज, द सोल्स हैव are provided with studs, okay, so that there is better grip on the ground, okay, and they do not sleep. Then this is it, and you can find so many examples around you where the area is less and the pressure, and hence because of the decrease in area the pressure becomes more and our work becomes easy. So you can see so many examples nearby you and surrounding you. Try to find them and try to learn from them. Okay, so till that time you take care of yourself, stay home, stay safe. Goodbye.